ग्रेड 1 यूनिट 3 एट द फार्म। फार्म वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है और जहाँ पर फसलों को भी महफूज किया जाता है। सो लेट्स नो द वर्ड्स मीनिंग फर्स्ट। एट द फार्म, बार्न, खलियान, कोठा, गोदाम। गोदाम इसलिए कहा गया है यहाँ पर फसलें वगैरह भी महफूज की जाती हैं और जानवर भी रखे जाते हैं। फार्मर, किसान। फील्ड, खेत। राइडिंग, सवारी करना। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। वॉर्म्स, कीड़े या फिर कीड़े मकोड़े। विजिटिंग, विजिटिंग मीन दौरा करना या फिर आना या देखने जाना, देखने आना। विजिटिंग द जू, विजिट द जू, विजिट द फार्म हाउस, वी कैन से एनी वर्ड। फार्म, खेत, जानवरों की मखसूस जगह। किटन्स, बिल्ली के बच्चे। बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। भौंकना, भूं भूं करना। प्लो, हल चलाना। ट्रैक्टर्स आर प्लोइंग इन द फील्ड। लैम्स, भेड़ के बच्चे। लैम, भेड़ का बच्चा, मेमना। ड्राइविंग, गाड़ी चलाना। ड्राइविंग, चलाना। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर एक वजनी गाड़ी होती है। दैट यूज्ड इन फील्ड्स। फास्ट, तेज। स्लो, आहिस्ता। स्लो, आहिस्ता। बिल्डिंग, इमारत। क्रॉप्स, फसलें। ऑन्स, ऑन्स मालिक होना। ऑनर, मालिक। पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा। लुक्स आफ्टर, देखभाल करना। व्हीकल, सवारी, गाड़ी। सवारी इज आल्सो यूज फॉर गाड़ी। सवारी, गाड़ी। कीपिंग एनिमल्स, जानवर रखना। कीप, रखना। कीपिंग एनिमल्स, जानवर रखना। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रो मीन उगाना। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाना। क्रॉप्स मीन फसलें। लेट्स रीड वर्ड्स टू नो फ्रॉम द बुक। बार्न, बार्न मीन गोदाम या खेत। अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म, अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म, फार्म में एक बड़ी इमारत होती है। फॉर कीपिंग क्रॉप्स और एनिमल्स, जो कि फसलें या जानवर रखने के लिए काम आती है। फार्मर, किसान। अ पर्सन हु ओन्स, जो मालिक होता है। अ लुक आफ्टर अ फार्म, या फिर खेत की देखभाल करता है। फील्ड, अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एनिमल्स आर ग्रोइंग क्रॉप, ज़मीन का वो टुकड़ा जो जानवरों या फिर फसल लगाने के लिए काम आता है। राइडिंग, सवारी करना। सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स, घोड़े पर बैठकर उसे कंट्रोल करना। इट्स कॉल्ड राइडिंग। ट्रैक्टर, 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 सवारी। ट्रैक्टर एक वजनी गाड़ी को कहा जाता है। हेयर इट इज ट्रैक्टर। A big strong vehicle that people use on farm. A big strong vehicle that people use on farm. एक बड़ी गाड़ी, बड़ी सवारी जो के लोग फार्म्स पर, खेतों पर यूज़ करते हैं। Worms, कीड़े। Small animals with long thin bodies and no legs. Let's move towards the lesson. It is Sunday. आज इतवार है। The children are visiting the farm. बच्चे फार्म की सैर को आते हैं या फिर बच्चे फार्म देखने आते हैं। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस, समी और निदा घोड़े की सवारी करते हैं। दे आर गोइंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही होती है। मरियम इज़ प्लेइंग विद किटन्स, मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेलती है। द काउज आर इन द बार्न, गाय अपनी बार्न में होती हैं। यहाँ पर एक बार्न बनाया गया है जो कि बाहर से बंद है। एक बाउंड्री लाइन बनाई गई है जहाँ पर गाय होती हैं और इस जगह को बार्न कहते हैं। काउज आर इन द बार्न, दे आर ईटिंग ग्रास, वो घास खा रही होती हैं। द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स, और मुर्गियाँ कीड़े तलाश कर रही होती हैं। द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, और कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा होता है। यू कैन सी इट हेयर, द डॉग बार्किंग एट द कैट। The lambs are playing in the field. भेड़ के बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। The farmer is driving the tractor. किसान ट्रैक्टर चला रहा है। The tractor is going fast. ट्रैक्टर बहुत तेज चल रहा है। Tractor is going fast. ट्रैक्टर बहुत तेज चल रहा है। Here is the full description of a farm or farmhouse, that there are so many animals and birds
and also there are fields and greenery all over here in the farm. And tractor is also here that is plowing the field. So it is whole description, it is whole picture of a farm. So here is a question. Do you know what a tractor is used for on a farm? So we can answer here. The tractor is used on a farm to plow the fields. We use tractors on a farm for agricultural purpose. Let's move toward the exercise of at the farm. Comprehension. Answer the following question. Where are the children? The children are visiting the farm, or we also can say children are in the farm. Children are in the farm. Question B. Who is playing with the kittens? Mariam is playing with the kittens. What is the dog doing? What is the dog doing? See, the dog is barking at the cat. So why are the chickens looking for worms? मुर्गियां कीड़े क्यों तलाश कर रही थी? Here chickens are looking for worms. So we can answer here chickens are looking for worms because they use them for eating. Chickens are looking for worms because they use them for eating. We also can answer it like this because chickens use worms as their feed. क्योंकि मुर्गियां कीड़ों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, फीड खुराक के तौर पर भी. Where are the lambs? भेड़ के बच्चे कहाँ हैं? So answer 5 or answer E. We also can say it E. The lambs are playing in the field. We also can answer it lambs are in the field. We only can say lambs are in the field or lambs are playing in the field. Question F is what are the cows eating? So here the cows are in the barn. They are eating grass. So we can say cows are eating grass. Next question is use the words from the story in the blanks. Sami and Nida are blank the horses. Sami and Nida are riding the horses. Right here riding. Mariam is dash with kittens. Mariam is playing with kittens. The dog is dash at the cat. Is barking at the cat. The tractor is dash fast. Going fast. The farmer is dash the tractor. Driving the tractor. Next question is make sentences of your own using these words. Number 8 driving, stopping, walking, flying. Driver is driving a bus. Stopping, rukna. Traffic police is stopping a car. Sentence of stopping is traffic police is stopping a car. You will make your own sentence. Next is walking. I am walking on the pavement. I am walking on the pavement. Pavement कहते हैं फुटपाथ को. Flying, उड़ना. Pilot is flying an aeroplane. Birds are flying in the sky. So, driver is driving a bus, traffic police is stopping a car, I'm walking on the pavement, pilot is flying an aeroplane or birds are flying in the sky. This is challenge for you. Which other animals are found on a farm? There are so many other animals are found on a farm. Duck, goats, cows, buffaloes, donkeys, camel, swans, hens, chicks, sheep, and so many other animals. Spellings. Add ing to the following action words. Action words in which you are doing an action, you are doing a job. Run, running, sit, sitting. Two N's, two T's. Same like this in question A. Hit, hitting. H-I-double-T. And then we will add ing. Hitting. Dip, D-I-double-P-I-N-G. Dipping. Put, putting. Cut, cutting. Fit, fitting. Hop, hopping. Pad, patting. Pad, patting. Sip, sipping. Rub, rubbing. Tap, tapping. Learning about language. The words in the exercise B1. This is B1. Driving, stopping, walking, flying.
The words in the exercise B1 are action words. They are not words for things. They are not words for things, mean they are not nouns. We also can call action words verbs. Words for things and words for action. Here are two lines where words for things, words for nouns, and words for action. Words for things are people, rat, table, house, banana, girl. Words for action sit, jump, running, sleeping, go. Put these words into the correct boxes. Shoe, buy, playing, take, tomato, boy, tooth, sing, rubbing, see, desk, pencil. There are nouns and verbs also. These are mixed over here. So we have to put these words in their correct boxes. One box is for things and one box is for action. Shoe, tomato, tooth, desk, boy, pencil. These are all things. These are nouns. Actions playing, rubbing, buy, take, sing, see. All these are actions. These are verbs. Question 2 is, can you add two words of your own to each box? Words for things are called naming words or noun. Chair, table, and action verbs drink, pina, eat. You can write everything here. Write, read, writing, reading. You can say anything. Listening and speaking, fast and slow. Work in pairs or small groups. Talk about the pictures given below, which is fast, which is slow. So the number A, horse. Horse is a fast animal. You have to write it in fast. Motorbike, it's a fast vehicle. Motorbike. Racing car, it's a fast racing car. Tortoise, it's a slow animal. You have to write it in slow. Plane, it's a fast. Write in fast portion. Baby, baby is slow because he cannot run, he cannot walk fast like elders. So we will write the name of baby in slow. Next is fill in the crosswords below with words of for vehicle. Follow the picture clues given below. Here's a clue hint. Starts with A, this one starts with A and ends with O. It means it's auto. So in number 9 we will write here AUTO, auto. So starts from the one number 1. Which picture is this? Obviously it's train. TRAIN, train. Number 2, it's truck. TRUCK, truck. All these line is written over here, and this is TRANSPORT, transport. So number 2, truck. Number 3, car. C, we will write here C and R. A is already here, car. Number 4, van. VAN, van. Number 5, bus. BUS, bus. Number 6, plane. PLANE, plane. Boat. BOAT, boat. It's a tram. Tram mean it's like a train that starts with coils. कोयले की गाड़ी या जिसको चक्कर गाड़ी भी कह सकते हैं. Tram, TRAM, tram. And last one is auto. Last one is auto. My family, male and female. Work in pairs or small groups. Talk about the pictures given below. Who are these people? So here are the name of people. Grandmother, his picture. Grandmother, mother, brother, boy, girl, man, father, sister, woman, uncle, aunt, grandfather. So you have to write them in separate portion. Can you put the words above into the two lists? Here are two lists, male and female. So grandmother,
It's female, mother, female, brother, male, boy, male, girl, female, man, male, father, male, sister, it's a female, woman, female, uncle, it's male, aunt, female, grandfather, male. You have to write them in portion. So here are males: brother, boy, man, father, uncle, grandfather. And here are females: grandmother, mother, girl, sister, woman, aunt. These are all in female.